Hello my dear students, we are discussing potential energy. Yesterday we had discussed gravitational potential energy. Today we will start our discussion of elastic potential energy. Now here we will discuss potential energy for a spring. So suppose this is a spring. A block is connected to the spring at this end. This is the natural length. Now you know that natural length is the length of the spring when there is no force in any of the directions. In this case, the force developed in the spring, that is the spring force, is equal to 0. अब ये नेचुरल लेंथ है, इस एंड पे रिजिड एंड पे इसको कनेक्ट कर फिक्स करके रखा है. अब इसके बाद सपोज इफ दिस इज मूव्ड इन दिस डायरेक्शन बाय अ डिस्टेंस से x, इस डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे, so in this case a spring force will develop in this. Okay, so spring force develop हो जाएगा FSP. Spring force का डायरेक्शन क्या होगा? It will try to restore this block back to this position, back to the natural length. So therefore direction of the spring force will be like this. Okay, now against this, if you are moving this by a distance of x in this direction, अगर इस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट x डिस्टेंस से इसको मूव कर दिया जाए, so what is the work done? Now work done will be equal to what? This will be equal to minus of, because this is opposite in direction, minus of half of k into x square. We have already discussed this earlier. So इतना वर्क परफॉर्म होगा. Now अगर इसको पोजीशन A माना जाए, इसको पोजीशन B माना जाए, तो what is the change in potential energy? Change in potential energy क्या होगा? Final potential energy UB minus initial potential energy UA. Now this will be equal to, you very well know, yesterday we had discussed that this is negative of work done by conservative force. Okay, now as you are aware that this is a conservative force, अब this will be equal to what? Minus of, what is the work done? Minus of half of k into x square. So therefore this will be equal to half of k into x square. So this is equal to UB minus UA. Okay, now this is what? Change in the potential energy, delta U. Clear? अगर हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी एट B फाइंड आउट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? UB is equal to half of kx square plus UA. इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी एट सम पॉइंट वी वांट टू फाइंड, देन वी मस्ट नो द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट ए. क्लियर? सो जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि कोई ना कोई एक रेफरेंस होना जरूरी है, तभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं. अदरवाइज हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? सिर्फ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए वी डू नॉट नीड एनी रेफरेंस लेवल, but to find out the potential energy at a particular point we need to have some reference level. So अगर UA का potential energy हमारे पास है, अब UA क्या है? Potential energy of the natural length. Okay, इसको it is convenient for us to take potential energy at the natural length equal to 0. अगर ये है तो UB is equal to half of k into x square. अभी हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा. क्लियर? कब? जब हमने एक रेफरेंस लेवल फिक्स किया है और उस रेफरेंस लेवल पे एनर्जी रेफरेंस कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, इसे फिक्स किया है. सो वी कैन नाउ फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी एट अनदर पॉइंट बी. क्लियर? अब सपोज एक और पॉइंट लेते हैं हम लोग, से दिस इज पॉइंट सी. ओके, नाउ इस पॉइंट पे यहां से अगर इस तरफ लेके जाना है हम लोगों को, ओके, सो दिस इज पॉइंट सी. सो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज यूसी. नाउ इधर से अगर हम लोग इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं, इन दैट केस व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इन मूविंग दिस ऑब्जेक्ट, मूविंग दिस ब्लॉक फ्रॉम ए टू सी. देखो इसको हम लोग इस तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं. क्लियर? इसका मतलब
जो स्प्रिंग फोर्स है दिस विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट अगर x डिस्टेंस से हम लोग इस तरफ लेके जाते हैं so this displacement from the natural length is taking place against the spring force. Clear? So therefore work done will be equal to what? Minus of half of k into x square. Okay, again this is negative. So therefore change in potential energy क्या होगा? uc minus ua. This will be equal to minus wc. Okay, इस केस में it will be what? Minus w work done in moving the block from A to C. Okay, now this is how much? This is equal to minus half of k into x square. Clear? So therefore this is equal to half of k into x square. अब इस केस में भी if you want to find out uc, that is the potential energy at C, then this will be equal to half of k into x square plus ua. But as you are aware that ua को हमने एक रेफरेंस लेवल लिया है and we have fixed the energy at that point to be equal to 0. So therefore uc comes out to be how much? Half of k into x square. So एक चीज आप लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स, in case of spring the potential energy is always positive. कब? Provided that you take the reference level where? You take the reference level at the natural length. अगर natural length पे reference level लिया जाए so potential energy in case of spring force, in case of a spring will always be what? Positive. Okay, तो ये एक note करेंगे. Potential energy in case of a spring is always positive if reference level is taken at NL, that is natural length. Okay, so natural length को पे अगर reference level दिया जाए तो the potential energy for the spring will always be what? Positive. Clear? So I hope you have understood potential energy in case of spring. Now let us discuss work energy theorem. So very very important work energy theorem. WET, work energy theorem. This is very very important for solving problems. देखो work energy theorem कहता क्या है? Now suppose there is a block like this. ये एक block है, इसका mass m है. This is on the ground. Now an external force F is acting on this. Now this force F is equal to mass into acceleration. Acceleration will be produced in this object. Clear? Provided that this force is greater than the frictional force. या फिर if we assume that there is no friction, this surface is frictionless, तो acceleration create हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? Velocity increase होगी. Now velocity increase होगी तो kinetic energy का क्या होगा? Kinetic energy will also increase. Clear? So in this case there is increase in the kinetic energy. किसके कारण? Force act होने के कारण. Clear? Now there will be work done. Work done will be equal to force multiplied by whatever displacement that is taken place in the direction of the force. So इस case में W will be equal to, will be what? It will be positive. Clear? अब imagine कीजिए कि the force acting on this is moving with say velocity v and force F is acting in this direction. So क्या हो जाएगा? Since the object is already moving with velocity v, लेकिन force तो इस direction में हो रहा है, तो velocity will start decreasing because this will produce some acceleration. Clear?
अब वेलोसिटी डिक्रीज होने के कारण काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके, नाउ वर्क विल बी डन, वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ F मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? क्यों? क्योंकि फोर्स, displacement और force they are in the opposite direction, so this is F dot S मतलब Fs into cos of theta, but theta is how much, 180 degrees, इसलिए माइनस हो जाएगा. Clear? So work in this case will be what, negative. Okay, now suppose this block has force F acting in the upward direction. Okay, apart from that, see there will be weight, then there will be normal reaction acting on this. Clear? But since there is no motion of the block, work done will be equal to what? Work done will be equal to 0. Kinetic energy will also be equal to what? 0. There is no motion for the block. इसका मतलब क्या है कि जब भी वर्क प्रोड्यूस होगा, किसके कारण? सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण जब भी वर्क परफॉर्म होगा, सो इट विल रिजल्ट इन चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. सो वर्क डन ड्यू टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस रिजल्ट इन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा. किसके कारण? जब भी वर्क परफॉर्म होगा बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब भी एक्सटर्नल फोर्सेस ऐड करेंगे, और बिकॉज ऑफ दैट इफ दोज एक्सटर्नल फोर्सेस आर प्रोड्यूसिंग वर्क, देन दैट विल डेफिनेटली रिजल्ट इन व्हाट, दैट विल रिजल्ट इन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? अब सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे different forces act on it. Now suppose there is a spring connected here, there is another force, say F external force which is acting on this. Okay, दूसरा एक force F2 इस तरफ act हो रहा है. Apart from that normal reaction force act होगा इस direction में. Spring force तो act हो ही रहा है. Okay, so FSP is also there. So there are different forces which are acting on this block. Now इसके कारण डिस्प्लेसमेंट अगर होता है, सो देयर विल बी वर्क डन बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. क्लियर? सो ये सारे फोर्सेस का वर्क डन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एफ एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस. ओके, कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस? जो अभी जो कैटेगरी हम लोग लिखेंगे उनको छोड़कर जो भी फोर्सेस है उनको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस. नाउ एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस दिस इज द फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स है. ओके, हम लोग जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या क्या है. कंजर्वेटिव फोर्सेस आर व्हाट, mg, that is the weight, gravitational force, then there is spring force. ओके, ये सारी चीजें क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. सो दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस सूडो फोर्स. ये सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? वी विल गेट व्हाट, नेट फोर्स. ओके, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस. ओके, नाउ दिस फोर्सेस विल रिजल्ट इन व्हाट? दिस विल रिजल्ट इनटू mass into, this will result into acceleration. So all these things will be equal to what? Mass into acceleration. Now this F external plus this conservative forces plus non-conservative forces plus pseudo force. Pseudo force कब लेंगे? When the observer is in non-inertial frame of reference. Clear? जब observer non-inertial reference frame में होगा उसी टाइम पे सिर्फ हम लोग ये pseudo force लेंगे. So all of them will be equal to what? Mass into acceleration. Acceleration is what? dv by dt, rate of change of velocity with respect to time. Okay, इसको क्या करते हैं? m into dv by dt को ds से मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते. Clear? So अब इसके कारण क्या होगा? This ds by dt will be equal to what? This is equal to velocity. So this is m. ds by dt is velocity into dv by ds. अब ये ds को इधर शिफ्ट कर देते हैं.
So what will happen? F external into ds plus Fc into ds plus Fnc on conservative forces into ds plus Fp into ds. This is equal to mv into dv. यही बचा है. Okay. Now ये सब अगर देखेंगे, so this will give what? This will give us the work done, force into ds. So this will give us what? The small work done by these external forces. अगर total work हम लोगों को find out करना है तो इसको integrate करने पड़ेगा. Similarly, this will give us the small work done by the conservative forces. Total work करने के लिए integrate करना पड़ेगा. Same thing here, here, and on this side. So this will give us what? The work done due to the external forces. This will give us what? The work done due to conservative forces. This is work done due to the non-conservative forces. Work done due to the pseudo force. This will be equal to m तो constant है, बाहर निकालेंगे. v का इंटीग्रल क्या है? v स्क्वायर. लिमिट डालते हैं. सपोज वेलोसिटी चेंजिंग फ्रॉम v1 टू v2. ओके, सो यहाँ लिमिट्स रखेंगे v1 टू v2. गेटिंग इट? So now this work done due to external forces plus work done due to conservative force plus work done due to non-conservative force plus work done due to pseudo force, this is equal to what? m into, अब अपर लिमिट डालिए v2 स्क्वायर, v की जगह पे v2 रखिए, v2 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट डालिए v की जगह पे v1 रखिए तो v1 स्क्वायर. क्लियर? So this will be equal to v square by 2 इसका इंटीग्रेशन आएगा. So ये 2 को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ. Okay. So this is equal to half of m into v2 square minus v1 square, that is half of m v2 square minus half of m v1 square. Now what is half of m v2 square? This is the final kinetic energy K2 minus this is what? Initial kinetic energy K1. Clear? So इसका मतलब this is equal to the work done due to all the forces. This will be equal to what? Delta K, that is change in the kinetic energy. इसी की हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले. The work done due to all the forces will result in what? It will result in the change in the kinetic energy. Yeah. Now, अगर if the observer is in inertial frame of reference, तब क्या होगा? WP will be equal to what? 0. Okay, because pseudo forces तो exist ही नहीं करेंगे, so there is no question of any work. Therefore WP will be equal to what? 0. So therefore what remains is only these things. Now अगर हम लोग ये माने कि this W external plus W non conservative, okay, यही सिर्फ इनको सिर्फ इस साइड में रखे, and then if we transfer the other one, that is work done due to the conservative force, to this side, then it will be equal to what? Minus of WC. But you very well know from our previous discussion that U2 minus U1 is equal to minus of work done due to the conservative force. So therefore this W external plus W non-conservative will be equal to what? This will be equal to K2 minus K1 minus of WC की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? U2 minus U1. अब इसको हम लोग ग्रुप करते हैं. K2 plus U2 minus कॉमन लेंगे K1 plus U1. So ये क्या देगा? This is the total mechanical energy, kinetic energy plus potential energy. So this will give us what? E2
final mechanical energy minus E1, this is the initial mechanical energy. So therefore work done by the external forces plus non-conservative forces, this will be equal to what? E2 minus E1. Okay. So ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम से ही डिराइव किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम. Okay, so this is the modified work energy theorem. According to this, work done due to the external forces plus work done by the non-conservative forces is equal to what? Change in the mechanical energy, that is E2 minus E1. Okay, this is the modified work energy theorem. Now if there are no external forces, no work is done by the external forces, if this is equal to 0, and suppose work done due to the non-conservative forces, non-conservative forces you know that friction, forces like friction. Okay, so if the work done by them is also equal to 0, then what will happen? E2 minus E1 will be equal to what? This entire thing is 0. So therefore E2 is equal to E1. इसका मतलब क्या है? There is conservation of mechanical energy. Therefore, mechanical energy is conserved. कब? जब work done due to the external forces, ये external forces में क्या आएगा? कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सूडो फोर्स, ये सब छोड़ के जो भी फोर्सेस है, दे आर दिस इन दिस कैटेगरी. सो इफ W external is equal to WNC is equal to 0, then E2 is equal to E1. अब E2 क्या है? K2 plus U2, mechanical energy, final mechanical energy. This is equal to K1 plus U1, that is the initial mechanical energy. Clear? इसका मतलब क्या है? इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे, so K plus U is equal to constant. So this is one important thing for solving different problems in our competitive exams. Clear? So this is the work energy theorem. We can apply this to solve the problems much more easier than we have been doing till now. हम लोग अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितनी हम लोगों को मेहनत पड़ रही थी, उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम एफर्ट्स में हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ओके, let us try to solve one problem. Suppose there is this spring, an object is connected here. This is the natural length. Okay. Now हमने क्या किया है? इसको compress कर दिया है. So यहाँ पे है ये. Suppose this distance is say x0. Okay, यहाँ पे हमने compress किया. This is position A. और यहाँ से we release it. तो यहाँ से जब release होगा, it will move here, but it will not stop here at natural length. It will move beyond this. Suppose यहाँ पहुँचता है वो, और यहाँ से यहाँ तक का distance है suppose x0/2. This is position B. Okay. Now we want to find out what is the just a minute, I'll just tell you the exact problem. What is the velocity of this block? ये जो block हमने connect कर रखा है, we want to find out what is the velocity of this block. Clear?
अब इसमें वी विल यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लियर। अब यहाँ पे जब हमने यहाँ से जब छोड़ रखा है हमने, जब स्टार्ट करते हैं सब वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। ओके, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जितना होगा उतना ही इस ब्लॉक का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी होगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन एनी there is no change in the level, so therefore potential energy यहाँ पे जितना भी होगा the same potential energy will be here also, okay, so here also your potential energy, gravitational potential energy, this will be equal to what, zero। अब दूसरा बचता है potential energy, अच्छा what will be the kinetic energy here, kinetic energy at this point will be equal to what, half of m into v square, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वाज इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी वाज आल्सो इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पॉइंट पे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ, यहाँ पे तो हमने जीरो ले रखा है, so therefore what is the potential energy in this case, this will be equal to half of k into x0 square। okay, और यहाँ पे potential energy कितना है, the potential energy at this point USP, this will be equal to what, half of k into x0 by 2 का square, clear। so then according to work energy theorem, the since there are no other see this is a frictionless surface, so non conservative forces का के कारण वर्क जीरो है, और दूसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स भी इसमें नहीं है, so therefore क्या होगा, E2 is equal to E1, so E2 में क्या क्या आएगा, all these energies, so this will be equal to what, half of m into v square, okay, plus half of k into x0 by 2 whole square, this is equal to E1। E1 में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये सब कुछ जीरो था, सिर्फ this is equal to half of k into x0 का स्क्वायर, okay, so therefore mv square is equal to, सब जगह हाफ है तो we will cancel that, this will be equal to what, k x0 square minus k x0 square by 4, clear। so therefore this will be equal to, k तो कॉमन होगा, या फिर इसका डिनोमिनेटर इज 4, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, ओके, इधर क्या हो जाएगा, 4kx square minus 1kx square, that is 3kx0 square, clear। so therefore v square will be equal to what, 3 by 4 kx0 square upon ये m, okay, so therefore v is equal to what, square root of 3 by 4 k by m into square root of x0 square, कितना हो जाएगा, x0, इसको बाहर ले लेंगे, clear। so this is the velocity of the ball। इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा by the application of work energy theorem, clear। so I hope you have understood work energy theorem and its application। now we will discuss some more problems in the next lecture so that your understanding becomes much better, okay। thank you very much for viewing this video।